to understand some limitations of S3. What are some limitations and how we can avoid them? How can we increase the performance of our S3? Okay, so S3 is designed to support a very high request rate. Okay, however, if your bucket is consistently receiving over 100 put list delete or over 300 get requests per second, then the awesome best practice guidance that will be help you to optimize the performance. Now, what do you mean by 100 put get list and delete or 300 get request? So, whenever you do an operation in S3, we have talked about that it is a HTTP request. So, whenever you are uploading anything, when you are listing the files or deleting the files, per bucket there is a limitation of 100 put request, list or delete, or at a time you can read 300 files, 300 get requests per second parallelly. Okay, now this was a old figure. Now it has been optimized to the new figure in 2018. So Amazon has increased the put and get request. Put means uploading the data. So now it's 3500 put request per second and 5500 get request per second. This is a performance of your S3 where in per second you can parallelly write 35 files, 3500 files, and parallelly you can read 5500 files. But there can be a performance issue, bottleneck. How can we improve the bottleneck? How can we increase the performance of our S3 even if Amazon is providing 3500 put or 5500 get request? So the guidelines are given by Amazon that the understand your workload. What is your workload? Are you reading more from your S3 bucket or you are writing and reading? It's a mix. So if you are reading the data more from S3, okay, so it's a get intensive workload. जब भी आप S3 में काम कर रहे हो और आपको कुछ bottleneck आ रहा है, आपको आपका S3 throttle कर रहा है और slow हो रहा है, so what can be the reason? You have to understand first, are you reading more, are you writing more? So if your work request is read more, just like अगर कोई आपकी वेबसाइट इमेजेस वेबसाइट है तो इमेजेस आप बार बार राइट तो नहीं करोगे, एक बार अपलोड कर दी, बट यूजर विल गोइंग टू रीड द इमेज अगेन एंड अगेन. ओके, सो यू और जैसे आपने वेब होस्टिंग करी है, so in that case also the data will be read by a number of people. So similarly it is a is your S3 is used for reading more data, then use CloudFront content delivery service to get the best performance. CloudFront cache your most frequently accessed object and it will significantly reduce the latency for your get request. अगर आपको लग रहा है कि आपका S3 स्लो हो रहा है and you are after analysis you found that your S3 bucket is more read intense rather than write intense, combine CloudFront so that the load from your S3 bucket can be reduced and the cache can be created in different locations. This is the one way which Amazon says that you can increase the performance of S3. Second, now your S3 usage is mixed request type, means it's a mix of put, get, delete, get bucket. Basically, it's not always you are reading the data, you're writing the data, you're reading the data, you're getting the information. Okay, then the key
The name of the key that you use for your object can really impact the performance intensity workload. Now how name of your key, the key which we are using, can impact the performance of the your workload. Key means the name of the file. So what Amazon does in generally, so basically, uh, what is key? Key is the full path of your object. Agree? Now if I have one folder underscore one slash, I have 10 files inside this. I have another folder. Okay, and so on in my S3 bucket. Okay, so according to you, how Amazon will store the data, all these files, in the single location, in multiple location, and if in single or multiple location, how it is going to store the data? अगर आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स है, सारे फोल्डर्स का डेटा एक ही स्टोरेज में होगा, मल्टीपल डिवाइसेस में होगा, कैसे होगा? सो जनरली Amazon चेक द प्रीफिक्स, स्टार्टिंग का जो प्रीफिक्स है आपका, जो ये है फोल्डर अंडरस्कोर वन, जितने भी प्रीफिक्स एक ही नाम से या एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो एक सर्वर, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास सर्वर नंबर वन स्टोर या डिवाइस, ठीक है, तो हो सकता है कि जितने भी एफ से स्टार्ट हो रहे हो वो सर्वर नंबर टू में डाल डाल दिया उसने, तो ये सारे की सारी फाइल्स सर्वर नंबर टू में, सो यहाँ पे 30 फाइल्स स्टोर कर दी उसने. Even though it has multiple server available, but because the prefix starts with for f, it might store all the data in the single server. उसने बोला कि f वाले सारे यहाँ पे रखूँगा, a वाले यहाँ पे रखूँगा, e वाले यहाँ पे रखूँगा. If you have given the folder name something like this, 20 active underscore one slash one. So in this case, all these objects will be storing in this folder, this server. Now you can see if some we can distribute these files. अगर ये 30 फाइल एक ही सर्वर में नहीं हो, if we somehow able to distribute this all 30 files into different server, we will get a more performance. क्यों? यहाँ पे सारी फाइल्स एक ही सर्वर में, अब मैं सारी सारी रीड करना चाहूँगा पैरेलली, तो एक ही सर्वर पिक्चर में आएगा, बाकी सारे सर्वर खाली बैठे हुए हैं. अगर मेरा डेटा बाकी सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट होता, सो पैरेलली 5 सर्वर काम करते, सो सर्वर पे लोड नहीं आता, मेरे को परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन नहीं होता. एग्री? यस और नो? ये सर. एक चीज किसको समझ नहीं आता बताओ. आपके S3 का जो डेटा है मल्टीपल डिवाइस मल्टीपल सर्वर्स में रहता है, एंड हाउ अमेजोन डिटरमाइन, उसके प्रीफिक्स यूज करते हैं. या जैसे फोल्डर वन है, जहाँ पे भी फोल्डर वन है वो एक सर्वर में रहेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे 10 फाइल है, ठीक है, चलो मैं ये बोलता हूँ कि ये वाला प्रीफिक्स इसमें है, यहाँ पे डाला, ये वाला प्रीफिक्स दूसरे वाला यहाँ डाला. अगर ऐसा किया और आपने यहाँ पे 30 फाइल रख दी,
ठीक है, और यहाँ पे आपकी कितनी है, 10 ही है। दस। अगर आप देखोगे, अगर आप खाली ये वाले फोल्डर में काम कर रहे हो तो यहाँ पे 30 फाइल है। या मैं और बढ़ा देता हूँ, अगर आप खाली फोल्डर 1 पे काम कर रहे हो, कितनी, 80। सारी की सारी फाइल्स एक ही सर्वर में जा रही है। बिकॉज ऑफ दैट you are not distributing your data to different servers, and you are only working on folder number 1. All the request, all the load is going to be handled by a single server, and because of that, that server will be under stress. If you know how Amazon distribute the data, you will try to create the folder structure so that instead of storing all the 80 files in a single server, they should be distributed in all the servers. And how it will help you, it will it will help you when you're reading the data. It will help you when you're reading the data, because now 5 server will come in picture rather than single server. Agree? That's what the second optimization is. So S3 uses key name to determine which physical partition and object is going to be stored, right? उसका जो की है, जो नाम है फाइल का, जो ऑब्जेक्ट है, उसे डिटरमाइन करता है कि उसको कौन से स्टोरेज में रखना है. The use of sequential key name, example name that are prefixed with the timestamp or alphabetical sequence, increase the likelihood of having multiple objects stored within the same partition. देखो, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस जैसे हमने अभी देखा, फोल्डर नंबर 1, इस केस में सारा का सारा डेटा एक ही जगह स्टोर हो जाएगा. For heavy workload, this can increase the IO contention because you're trying to access the file that are physically stored within the same partition. राइट अभी हमने बात करी उस पर कि अगर आप सेम प्रीफिक्स है, वो सेम पार्टीशन पे स्टोर होगा और उसका आयो बढ़ जाएगा. By using a random prefix to the key name instead of sequential one, you can actually force S3 to distribute your key across multiple partition, thus distributing your IO. मतलब कि अगर आप फोल्डर वन की जगह आप इसको कुछ रैंडम की दीजिए, जस्ट लाइक ये एग्जांपल है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, फॉलोइंग आर द सीक्वेंस ऑफ नेम आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड. कैसे? ये मेरा बकेट है और ये की है. अगर आप देखोगे ये तीनों फाइल, ये तीनों की तीनों ऑब्जेक्ट्स आर इन अ सिंगल फोल्डर, राइट? नाउ इफ यू वांट, आई वांट टू ऑप्टिमाइज, ऐसे ही एन नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती है. अब बिकॉज इट हैज सेम folder or prefix, all the data is going to store in a single system. It will be not going to distribute the data into multiple devices. So what Amazon says is, don't use the same prefix for optimizing. Introduce some random in the key name. Example, prefix key name with the 4 character hexadecimal. So instead of writing this thing, introduce some random values in the beginning. What will happen now? This file will store in different facility. This object will store in this different facility. This file is stored in different facility. Similarly, if you are introducing more random keys, your data will be stored in random servers, increasing the your increasing the performance of your system. Is it clear what I'm trying to say? So we need to add that prefix in the starting only, or we can add it anyway. Generally, जो फाइल का नाम है, apart from that, this should be random, full path.
full path should be random. But for right now, for your understanding, always add in the starting. Okay, always add in the starting. So don't keep everything in a single folder, single structure. Try to distribute in different folders from starting. The more you distribute the file, and don't use the same prefix as well. जैसे यहाँ पे एक भी अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने चलो सेम फोल्डर में डाला बट आपने 2018 ही लिख दिया दूसरे फोल्डर का नाम भी अंडरस्कोर 03 की जगह 04 डाल दिया आपने नेक्स्ट यहाँ पे 2018 03 है आपने 04 डाला हो सकता है शायद सेम में चले जाए क्योंकि स्टार्टिंग का वर्ड एक ही है ट्राई टू मेक मोर डिस्टिंक्ट स्टार्टिंग वर्ड्स और प्रीफिक्स ओके this will help Amazon to distribute your data effectively. Okay, this is a very basics which we are covering. And you will say sir 5500 request per second तो बहुत ज़्यादा है ये तो कभी ब्रिज नहीं होगा and from my experience I have hit this scenario n number of times because we are doing so much parallel processing and because of having the data in a single structure single folder structure we are hitting this 500 5500 guest request on a daily basis. Then we have again optimized our data, how we are writing it, how we are reading the data. Yes, This is what we called it as a transition per second (TPS), right? transaction per second, you can say that, but more of it is generally called uh, IOPS, input output uh, per second. Transaction per second generally it's the process, but it's an input output for your hard disk. If you are talking about your reading the data, how much data you are writing or how much data you are reading from a disk. So it's a transaction. It's same, but in hard disk we call it IOPS. So for IOPS, we are going to have a little more understanding when we are going to use block storage, which is your actual hard disk. It will be in EC2. Okay, clear. So in 2018, Amazon has increased the performance of S3, but still people are hitting this thing. I have this issue couple of months back, and we have to re-architect our design. When we initially design our architecture, we didn't thought that we are going to hit 3500 or 5500 read and write request in S3 in parallel. But right now our every other job is reading a massive amount of data. This is a new increased performance nag the previous guidelines to randomize your object name key to achieve faster performance. This means logically and sequential name pattern can now be used without any performance impacting, but still it बोला कि अगर आपके पास इतना इनपुट आउटपुट है स्टिल आपको परफॉर्मेंस का इशू नहीं आना चाहिए बट in my case I have seen because still we are using so much massive parallel processing हमको हिट हो जाता है so if you are facing this issue you should try to randomize the keywords remember that two approach if you are reading the data more rather than writing go for the cloud front and if you have a mix reading writing then try to randomize the keywords. This is how you can improve the performance of your S3. Any question? Okay. Are we clear here? This is a best practice which Amazon says to use.
There are some recommendation for optimization and how you can increase the performance of your services. Okay. The next topic is Snowball, AWS Snowball. Now, before that, let's try to understand a couple of scenarios. Okay? A very simple. I want to ask you one question. When you are migrating your company to cloud, okay? Frankly, industry में there are n number of companies who were previously working on on-premise wants to migrate to cloud. अगर आपके पास कंपनी आती है, and I'm frankly saying there are n number of projects in the market where the company has a requirement is a data migration project or database migration project, or basically moving the client's data to cloud. And for this, Google has started an initiative. They are going to set up a office in Pune, which will just focus to bring the customers from on-premise to cloud. Okay, right now there is some work is going in Google as well. So in industry, majorly the product right now is moving the on-premise infrastructure or ecosystem to cloud. Okay, sorry. So what is the first thing you will do when your client says they want to move to the cloud? What is the primary thing a company will need to move their application, their software, their ecosystem to cloud? जब भी आप अपने पुराने मोबाइल से नए मोबाइल पे माइग्रेट करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? माइग्रेट. Data. Yes, application and data, both, right? So I'm not talking about right now applications जो कि आपकी सर्विसेज है, but one thing is data. You have to migrate the data completely to cloud. So this is one time activity. Agree? This is one time activity where you might have to transfer terabyte of data to petabyte of data to cloud or even more. Can you upload or can you transfer the data over the internet to cloud? In cloud, where we are storing the data? In S3, right? In cloud, we are storing where? Always remember, 90% of the data we are storing in cloud is on S3. Mostly, if you are working in AWS, your full data will be stored in S3. Okay, very rarely the other storage devices are used because they are costly. S3 is cheapest storage service in AWS. So when you want to migrate your client to a cloud, you want to migrate the data. So first thing you will migrate the data to S3 bucket. How will you move the data? You will just upload the data over the internet. इंटरनेट के थ्रू आप करोगे क्या? अगर मैं बोलता हूँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा माइग्रेट करना है, तो आप क्या इंटरनेट का यूज करते हो या कैसे क्या यूज करते हो? अभी पेटाबाइट का डेटा है, मतलब आपका इंटरनेट इतना फास्ट इनफ नहीं होगा. अगर जब इंटरनेट फास्ट नहीं हो तो हम क्या कैसे माइग्रेट करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस?
जनरल हम्म बोलिए। Generally through wired cable, like connect one device to another device through wired cable, and it will be पास में transferred. नहीं है दोनों कंप्यूटर, किलोमीटर से दूर से है। चलिए, दिस इज वन ऑप्शन। using internet. इंटरनेट इतना स्पीड नहीं है मेरे पास। हम लोग यूज कर Bandwidth issue. हम्म करते थे हम लोग। अभी इंटरनेट आपको लगता है कि इंटरनेट से करते हैं? 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या डिवाइस यूज करते थे डेटा ट्रांसफर के लिए? Okay. USB devices या hard disk, separate hard यस, disk. यू यूजिंग सम एक्सटर्नल डिवाइसेस just like pen drive, hard disk. Agree? So what you are doing, you are transferring the data in a portable devices, right? Which is a, you can take that devices and upload to other device. This was a thing you are doing, and this is a one-time activity, not daily activity. Okay, so there are two things. There is called one-time activity, and there is a daily. Daily मतलब अभी मैंने बताया कि कई कंपनीज अभी भी ऑन प्रीमाइस और क्लाउड दोनों पे काम कर रही है, हाइब्रिड कर रही है। कि यहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है आपका ऑन प्रीमाइस, क्लाउड पे जनरेट नहीं हो रहा। ऑन प्रीमाइस में आपके आईओटी सेंसर्स है, राइट? आपके मशीन्स ऑन प्रीमाइस पड़े हुए हैं, वो टेराबाइट ऑफ डेटा डेली जनरेट कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस। सो आपको डेली बेसिस पे अपलोड करना है, राइट? चाहे आप सब कुछ क्लाउड पे कर रहे हो, पर डेटा जनरेशन जो सोर्स है वो आपका ऑन प्रीमाइस ही है अभी। बाकी आपने कुछ सब कुछ बंद कर दिया ऑन प्रीमाइस, सब कुछ क्लाउड क्लाउड पे लेके आ गए। दैट इज अ डेली एक्टिविटी। बट उससे पहले वन टाइम एक्टिविटी, मैं पूरा सर्विस क्लाउड पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे पेटाबाइट का डेटा था, उसको मेरे को लेके आना था क्लाउड पे। सो देयर आर टू कंसेप्ट, वन टाइम एंड डेली। ये क्लियर है? समझ आया डिफरेंस क्या है वन टाइम एंड डेली में? वन टाइम मतलब कि आपके पास हिस्टोरिकल डेटा, जितना भी डेटा आप पूरा माइग्रेट करके लिया है क्लाउड पे, और आपने ऑन प्रेमाइस में सारी सर्विसेज बंद कर दी। बट जो आपका डेटा जनरेट हो रहा है जो मशीन से, वो क्लाउड पे तो नहीं है ना? जो जो भी सेंसर से क्लाउड पे तो नहीं है, वो आपके यहीं पे ऑन प्रीमाइस पर जनरेट हो रहे हैं, और वहां से आप इनको क्लाउड पे लेके आ रहे हो। और दिस आर डेली बेसिस, टेराबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है डेली बेसिस। मेरी कंपनी में भी होता है। ओके, दिस इज व्हाट is the requirement. So will talk about this first, then we will go to on daily. So how we can transfer the huge amount of data on daily basis? No, sorry, for the one time. So that's where a snowball will come in picture. Okay, दिख रहा है कुछ हार्ड डिस्क जैसा? So Snowball is a petabyte scale data transfer solution that uses secure application to transfer huge amount of data in and out of AWS. Again, it's not only into the AWS, it's also out of the AWS. Both in and out. Using Snowball, address common challenges with large scale data transfer, including high network cost, long transfer time, and security concern. दो तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर आप इंटरनेट के थ्रू करते हो? सो लॉन्गर ट्रांसफर टाइम एंड सिक्योरिटी कंसर्न। एक तो आपको कॉस्ट भी बहुत आएगा इंटरनेट के थ्रू करोगे तो, आपको इतना बैंडविड्थ चाहिए, पेटाबाइट ऑफ डेटा। प्रॉब्लम नंबर वन, अगर आपने अच्छा बैंडविड्थ भी लिया है तो कनेक्शन टाइम आउट होने के चांसेस है, आपके डेटा करप्शन होने के चांसेस है। एंड थर्ड इज सिक्योरिटी कंसर्न। इतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, किसी ने आपका ट्रांसमिशन हैक कर लिया तो दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन, राइट? जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं हम लोग, पेटाबाइट की। ओके, so these are some challenges which we want to avoid. Okay, petabyte of data. So this is similar to hard disk. So transferring the data with Snowball is easy, fast, secure, and can be a little as 1/5 cost of what you pay for the high speed internet. Okay, using a Snowball,
You can save the money and you can securely upload your data to S3 bucket. ठीक है, कैसे, क्या है? Snowball come with in two flavor, 50 terabyte and 80 terabytes. Snowball के दो वैरायटी है. So basically करना क्या होता है? We can just go to AWS console, order a Snowball. Amazon will send this device to your home or your data center. Okay, and you can connect this device to your data center, download the data which you want to migrate to S3 bucket. Okay, and raise the second request that I am done, please take this device and transfer or upload the data from this device in your specified S3 bucket. या आपके लोग आपके S3 bucket में इसको अपलोड कर दो, सीधा आपने इतना बोला. So you will raise a form, you will raise a request to Amazon stating that I want to transfer a huge amount of data. Please send me the Snowball from any of these two flavors. They will send this device to your home or your data center. Okay, connect this to your data center, upload the data in this device, and return back this device to Amazon. They will transfer the data into your S3 bucket. Simple. Snowball use multiple layers of security designed to protect your data, including tamper resistance enclosure, 256-bit of encryption, and industry standard trusted platform module designed to ensure that both security and full chain of custody of your data. Now, I have told you previously as well, data is like a money to everyone right now. अगर यहाँ से आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने डेटा सेंटर से यहाँ पे और S3 बकेट में इस डिवाइस के अंदर, तो हो सकता है ना कि कोई बंदा ये डिवाइस चोरी कर ले, हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि कोई इसको हैक करने की कोशिश करे. उसके लिए उन्होंने 256 एंक्रिप्शन दे रखा है. सो नोबडी विल एबल टू हैक योर डेटा एज वेल एज डिवाइस का जो फिजिकल डैमेज है उसके लिए दे हैव इंक्लूड टेम्पर रेजिस्टेंट इंक्लोजर. सो दे वांट योर डेटा टू बी as secure as possible. It's just like transferring a money from one location to ATM, from bank to ATM. तो आपने देखा होगा nowadays there are so many trucks are designed in such a way that the secure transfer of money from bank to ATM can take place or between the banks. Similarly, आपके डेटा सेंटर है और Amazon के डेटा सेंटर के बीच में डेटा मूव करना है using this device. So they have to make sure that everything is secure, right? Once your data is transfer is completed, okay, once your data transfer job has been processed and verified, Amazon perform a software erasure of the Snowball application. Means जो भी डेटा इस डिवाइस में है, अब आपका काम खत्म हो गया तो Amazon के ये बॉक्स फेंक देगा क्या एक बार एक्टिविटी करने के बाद? What Amazon will do? Amazon will allocate this device to next person. Agree? मान लीजिए कि ये डिवाइस आपके पास आया और आप you have some crazy idea. Let's try and recover the data which was stored previously in this device. There are n number of recovery softwares available in the market, right? Let's try to check. देखो आपके पास आया तो खाली आएगा ideally, but you have some crazy idea. Let's try to run some algorithm, run some software on this device and try to recover the data which was stored previously, making Amazon vulnerable or getting exposed of the data of the previous owner of this device.
जो भी इस डिवाइस का प्रीवियस ओनर था उसका डेटा वर्नेबिलिटी पे आ सकता है अगर आपने ये सब कुछ हरकतें करी तो. So for that, Amazon wipe outs the data as well as any chances of recovering the data from the next owner. Okay, so that is what Amazon does for making your data secure. कि जैसे आपका काम खत्म हो गया, वो डेटा डिलीशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका डेटा वाइप आउट कर देगा, विच विल नॉट एबल टू रिकवर इन एनी हाउ. क्लियर? साउंड्स गुड. व्हाट इज स्नोबॉल? इट्स अ प्योर स्टोरेज. It's a pure storage, just like a hard disk. Imagine this like a hard disk, external hard disk. Any question? So during this process of data processing, how basically once it is uploaded, how basically they verify that all the data has been uploaded there? Is it Okay. Uh, so basically, you are uploading your data, and in what are the amount of data is there in this device, they are going to upload in S3. So Amazon has their own verification methods and techniques, and even you can verify कि जैसे आपने बोला कि मैंने यहाँ पे 4 GB का डेटा डाला था, right? You can go into your S3 bucket, the specified bucket which you have uploaded. So generally, what companies do, they don't delete that data from their on-premise immediately. यहाँ पे एक डिवाइस जितना डेटा है, यहाँ पे 4 GB का डेटा आपका था, अज्यूम करो, सिंपल. ओके, अभी हमने आपको टेस्टिंग के लिए आपने डिवाइस मंगाया, 4 GB का डेटा यहाँ पे था. नाउ यू हैव यूज दिस डिवाइस एंड आस्क अमेजोन टू अपलोड टू S3. नाउ इवन यू आर गोइंग टू वेरीफाई ना कि मेरा 4 GB का डेटा आया कि नहीं आया, जो फाइल्स यहाँ पे थी वो यहाँ पे भी है कि नहीं. दैट्स व्हाट yes. यू विल डू, एज वेल एज अमेजोन विल डू ना, कि यहाँ पे जो 4 GB का डेटा था, यहाँ पे 50 फाइल थी, कि यहाँ पे भी 50 फाइल अपलोड हुई कि नहीं हुई. एंड इवन देयर विल बी a number of methods. So Amazon is not sharing everything how they are doing internally. First of all, we know the process that this is what Amazon is doing, but internally they make sure that everything is done perfectly or without any issues. What I can say right now. Okay. Yeah. Okay. Now coming, this is a snowball. Now next is no snowball age. Now what is snowball age? From the name itself, we can understand it's a new version of snowball. It's a next generation of snowball. Okay. So what is snowball age? So again, it has all the features of snowball, plus in this it also come with a memory or computer basically. Okay, it has a computing power as well. तो storage तो है ही है, as well as it has a computing power. Computing power मतलब इसके अंदर उन्होंने CPU भी डाल के रखा हुआ है. Getting? So what they have done? So Snowball Edge comes with 100 terabyte data transfer device with an onboarded storage as well as computing capacity. You can use Snowball Edge to move large amount of data in and out of AWS, as well as temporary storage tier for large local data set, or support large workload in remote or offline location. ठीक है. अब आप बोलोगे सर मुझे तो सिर्फ स्टोरेज चाहिए था, मेरे को कंप्यूटिंग पावर क्यों चाहिए? वाई आई विल रिक्वायर्ड अ कंप्यूटिंग पावर इफ आई हैव कंप्यूटिंग पावर इन माई AWS. हम लोग AWS में यूज़ करते हैं. वाई आई रिक्वायर कंप्यूटिंग पावर? सो लेट्स से टेक एग्जांपल, आपकी कंपनी में कोई एक एडॉक सर्विस आया, ठीक है. आप सारा डेटा ट्रांसफ़र अभी अमेजोन पे नहीं किए,
आपकी कंपनी में ये सारा डेटा है, एंड आपको कंप्यूटर्स चाहिए। ठीक है, आपको कोई टास्क आया, जस्ट लाइक सबके सीए सब इनकम टैक्स फाइल करते हो मार्च एंड में। मार्च एंड पे सारे इनकम टैक्स पोर्टल एकदम हाई लो उस पे हो जाते हैं, वर्कलोड पे, राइट? तो उसमें आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए, एडिशनल कंप्यूटिंग पावर चाहिए। पर आप क्लाउड पे हो क्या? अभी नहीं, मैं भी क्लाउड पे नहीं हूँ। सो व्हाट यू कैन डू, you can order these computers basically at your on premise and use it as a additional computing power। वर्कलोड जो आपको इंक्रीज हो रहा है, आप इनसे करवा लो थोड़ा सा। इट इज अ एडिशनल वर्कलोड विच यू कैन डू ऑन दिस डिवाइसेस एज वेल एज। आपके पास हर जगह इंटरनेट रहता है क्या? You might have seen in movies, there are so many scientists, there are so many researchers are going in North Pole on different high latitude or remote locations where there is no internet connectivity, but they are doing some research work which required high computing power। वो कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं और उनको डेटा वगैरह डाल के उनको आउटपुट निकालना होता है वहीं पे, राइट? दे टेक देयर ओन डिवाइसेस देयर। सो अगर आपकी कंपनी को डिवाइस खरीदने नहीं है, they can order the devices from Amazon on a rent basis and you can use them in remote location। आप अपना काम करो और Amazon को वापस कर दो। It comes with storage as well as computing power। समझ आया इसका यूज केस? Yes or no? Okay। Snowball Edge connects to your existing application and infrastructure using standard storage interface, streamlining the data transfer process and minimizing the setup and integration। Snowball Edge can cluster together to form a local storage tier and process your data on premise, helping ensure your application continue to run even when they are not accessing to cloud। So ये क्या कर सकते हैं आप, तीन चार डिवाइस मंगा के एक क्लस्टर बना सकते हो, और आपको कुछ एप्लीकेशन रन करना है, आपको कुछ डेटा प्रोसेसिंग करना है या कुछ हैवी वर्कलोड करना है, तो आप कर सकते हो विदाउट हैविंग इंटरनेट। ओके, are we clear with the snowball and snowball edge? So you will say sir, इसके charges क्या 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 है? So again, go to your AWS, go to your go to Google, search snowball prices। Okay, so this is a price of your snowball, and snowball edge also you will find। So 10 days का $300, okay, or 10 on demand $30 per day। These are the pricing, different CPU and all information and different location। So you can check it out, different features। Okay, and even they have given example how they are calculating the charges। Okay, so to they basically take that they don't charge you for the device, they charge for the transportation generally, that's what they are saying, the shipping charges। Okay, and a little with the charges for the transfer, but it's very minimal। Okay, are we clear till here? Now, if what is the maximum size of snowball is 100 terabyte, right? But what if I have to transfer, what if I have to transfer uh, 5 petabyte of data?
or if you want to reduce 10 only 1 petabyte of data. Now you so sir 1 petabyte तो बहुत ज़्यादा है. On a daily basis Twitter is generating this much amount of data. So petabyte is not that much huge data nowadays. And if you want to transfer this data to AWS, how many snowball will required in both the cases? In this case 10, minimum 10. In this case it will be Yes. 50. Mm. Again इतना इतने snowball मंगाओगे, इतने उनमें डेटा ट्रांसफर करोगे, कितना हेडेक पड़ेगा? How much time it will take? And how much man force and how much uh, cautious you have to cautiously you have to transfer the data, right? So you went to Amazon, you said that boss, I have 5 terabytes of data. How can I transfer this to Amazon? You are giving such a good services, but it is not possible for me to transfer the 50 terabyte of data, or 5 terabyte of data. And if you are using your snowball or snow edge, it will take fortune for me to transfer the data, right? So I will not come to your AWS services. I'm happy to work on premise. If you have some alternative, let me know. How can I transfer this huge amount of data? Got it? Yes, sir. So that's where Amazon thought, okay, people are keen in moving their data to cloud. Okay, they want to move, but they are facing some issue with huge amount of data, and the small devices are no longer useful. Okay, so they thought of this, sending this truck to your on-premise. Okay, so what is this? This is no mobile. They send a they are sending a remote mobile data center at your data center. So this is a working data center. It is 45 feet lorry or truck which contain a number of servers. You can say it's a data center on the wheel. Okay, so Snowball is a exabyte scale data transfer service used to move extremely large amount of data to AWS. You can transfer up to 100 petabyte per Snow Mobile. It is a 45 long ruggedized shipping container pulled by a semi truck. How futuristic Amazon has thought, you can imagine now. They are sending this lorry, this truck to your data center to transfer the data to from on-premise to cloud, or even for mass data processing. अगर आप चाहो तो इसको अपने डेटा सेंटर में रख सकते हो, और you can process the data. You can do some huge amount of analysis and data processing. Snowball make it easy to move massive volume of data to cloud, including video libraries, image repositories, or even the complete data center migration. Transferring data with Snow Mobile is secure, fast, and cost effective. Okay, so you might have seen in movies, there are so many spy movies are there where they are having their computers in their truck. They are roaming around the city, chasing some guys and getting some data about that. वैसे कुछ है, वहीं से इंस्पायरेशन लगता है उनकी. बट एनी हाउ, दिस इज वॉट अमेजोन इज प्रोवाइडिंग यू. ओके, क्या आप ये डेली मंगा सकते हो क्या? कैन यू ब्रिंग ऑर्डर स्नो मोबाइल स्नो एज डेली बेसिस? नहीं, दिस आर फॉर वन टाइम एक्टिविटी. Okay, this all devices are for transferring a huge amount of data
or migrating a complete data center to the cloud. This is a one-time activity. Clear? Any question? So where you can order, how you can order this thing? Log into your AWS console. Just write snowball family or snow family. So you can see there are so many devices are available. Even there is a new service, I think Snowcone, uh, not popular right now. Snow mobiles, snowball. Okay, you can just click here. It will show the pricing, and if you order a snow family. They click here. What do you want to do? Import the data into the S3, import or export the data to from S3. Now we have talked about the the last topic which I want to say is we talk about moving the data inside the cloud. Now it's not always that you are moving the data from your on-premise to cloud. You might be exporting the data from S3 to on-premise or somewhere else. So it's for uploading as well as downloading. Okay, so click here, fill the form, all the information. Okay, fill your details here, how many days you want, some GST information, all this information you have to fill, the security things, everything. The form you have to fill the form, and they will show you the charges, and you can order it. Okay, again it's a chargeable service, not free. Okay, you can check some videos which they have shown you on the document itself. This is what altogether is Snowball or Snowball family. So Snowball can export or import to S3 as well as export from S3, both. Any question? बोलिए. Sir, there may be the situation like, that during this data migration, uh, that company uses some kind of ETL tools for the data extraction from one server to other servers, Okay, right. right? Mm-hmm. So, like, in that case, like, So what will be the situation? Like, should we go with that approach or this approach, basically? okay, so देखो, there are two things. I have talked about the data extraction, not the tool or the service, right? So one thing is how to migrate data to cloud. हमने कर दिया. Now you are saying the application or the tools or the services which we are using on premise, right? Some softwares, that software or the services आप on premise में use कर रहे थे, that also you need to migrate. But it's not data, it's service, it's software. So मैं जो data migration process की बात कर रहा हूँ आपसे, it's not only about data, it also talk about the application. जो आप ETL tool बोल रहे हो, यहाँ पे ETL यहाँ पे, so that ETL tool should also be present here, right? Or if it's not present, you might have to develop it, you have to purchase it, you might have to uh, integrate or do some demo here. If that works, then only you will migrate the whole data, right? That's what uh, data migration project for the companies, which is most of the companies are doing. I have done that project for 2 years. हमने क्या किया था, हम यहाँ पे पेटाबाइट टेराबाइट से पेटाबाइट ऑफ डेटा पड़ा हुआ था. तो हमने क्या किया, नहीं, यहाँ पे हमने जीबीस ऑफ डेटा ट्रांसफ़र किया ऐसे ही. ठीक है, उनका ईटीएल टूल चलता था ऑन प्रेमाइस. हमने जो भी ईटीएल टूल था उसके कॉरस्पॉन्डिंग अमेजोन ने जो ईटीएल टूल प्रोवाइड करे हैं, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं. सो हमने डिफरेंट यूज़ किया, कॉस्ट सेविंग किया, और एक पूरा पाइपलाइंस और पूरा फ्लो हमने डिज़ाइन किया. Hello, sir. यस.
ETL कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या है? ETL is a tool, it is a concept called uh, extract transfer load. बेसिकली जब आप डेटा से डील करते हो डेली बेसिस पे, तो डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को आप मैनिपुलेट करने के लिए और स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो। ओके, दिस है कंसेप्ट। वहाँ पे इंडस्ट्री में एन नंबर ऑफ टूल्स है। इट इज़ अ ओके। डेटा से खेलने के लिए टूल है। जस्ट लाइक आप यस। कोडिंग के लिए पाइथन जावा वगैरह यूज़ करते हो, डेटा के लिए भी हाँ। वैसे ही टूल्स जनरेट किए गए हैं, तो उनको ETL टूल्स बोलते हैं। ओके एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड, रीड करो डेटा को मॉडिफाई करो, फिर वापस से रख दो। ओके, सो यहाँ पे आपके जितने भी डेटा प्रोसेसिंग टूल्स होते हैं ना, वहाँ पे ऑन प्रेमाइस चल रहा है। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे डेवलप किया। इट माइट बी सेम टूल, इट माइट बी डिफरेंट टूल, बट इनपुट हमने जो दिया आउटपुट सेम होना चाहिए, राइट? क्लाउड पे भी। यस। अब क्लाइंट से हमने डिस्कस किया, दिस वी हैव डेवलप्ड। हमको 6 मंथ्स लगे डेवलप करने में, उनसे रिव्यू करवाया, व्हेन द क्लाइंट वाज सेटिस्फाई वी माइग्रेटेड द डेटा टू क्लाउड। ओके, नाउ एक दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, हो गया। बट जो डेटा इज जनरेटेड कंटिन्यूअसली, राइट? वी आर स्टोरिंग द डेटा यस। इन S3। दिस इज वन टाइम कि यहाँ पे मैंने पेटाबाइट ऑफ डेटा अपलोड कर दिया। बट अब जो डेली डेटा जनरेट हो रहा है जो कि टेराबाइट्स में है, वो कहाँ से लाके देंगे हम लोग? तो नाउ दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरली क्लाइंट, कि वो क्लाइंट यहाँ पे मूव करे, या तो फिर वो हमको भी बोल सकते हैं कि मेरा डेटा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ऑन प्रीमाइस पे जनरेट हो रहा है। उनके यहाँ पे भी कैसे आता होगा ना, यहाँ पे या तो वो डायरेक्टली S3 पे अपलोड कर दे पहले से ही, है ना? उनके ऑन प्रीमाइस पे भी कैसे आ रहा होगा, तो वही सोर्स हमारे S3 में डाल दे। और अगर वो नहीं कर सकते, वो बोलते नो, वी कांट इंटीग्रेट दिस थिंग, अवर डेटा इज कमिंग ऑन अवर ऑन प्रीमाइस, तो यहाँ से आपको कनेक्टर बना के अपलोड करना पड़ेगा डेली। डज इट मेक सेंस? ये जो डेली वाला जो हम्म। कनेक्टर है, हम्म। राइट? तो उसके लिए भी कोई कॉन्फ़िगरेशन है AWS में, या देर आर उसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है? देर आर द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम नॉट टेकिंग टुडे, इट्स AWS स्टोरेज ओके। गेटवे। ओके, इट्स प्योर थियोरेटिकल। वहाँ पे उन्होंने 4-5 कनेक्टर्स दे रखे हैं। इट्स यू कैन यूज इट, यू कैन इंस्टॉल इट ऑन प्रीमाइस। कल मैं उसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। बट देर आर अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट, ठीक है? होता क्या है, जनरली ये सब टूल्स अवेलेबल है, एवरी कंपनी इवेल्युएट on the performance and the costing wise, and some company use the custom or customly out of the box services provided by Amazon, or some companies don't trust these devices or tools, they might develop their own tools। जो आपने बोला सेकंड कि हमको कोडिंग करना पड़ेगा, क्या हो सकता है, नॉट रिक्वायरमेंट। उनको लगता है कि ये टूल है सिक्योर नहीं है, एग्जांपल बैंकिंग, वो बोलते नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाई, सो दे विल डेवलप देयर ओन टूल। This is a one exercise. Even there are so many services in S3 which can directly connect from your source, data generating source, okay, source of so वहीं से आपसे connect कर सकते हो। Just like your IoT devices example, nowadays you might have seen IoT, Internet over Thing, right? कि आपकी ट्यूबलाइट से डेटा जनरेट हो रहा है, आपके AC से डेटा जनरेट हो रहा है, and directly that data is going to your service centers, है ना? आपके आज की तारीख में जो आपका AC खराब हो जाता है, फट से सर्विस सेंटर को पता चल जाता है। ओके, हाउ दे आर कंटिन्यूसली सेंडिंग द डेटा टू द क्लाउड और देयर कस्टमर बेस। आपका जो भी जिससे आपने AC लिया है, वहाँ पे डेटा चले जाता है। अगर वो क्लाउड पे है, तो क्लाउड के पास कनेक्टर्स अवेलेबल है। ओके, बट हाउ यू आर यूजिंग देम, हाउ यू आर इवेल्युएटिंग देम, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग कि आप कितना अडॉप्ट करते हो। क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन टिल यू? साउंड्स गुड? ओके, नाउ फॉर योर लैब हमने छोटा सा बचा हुआ है, एक दो लैब्स बचे हुए हैं, वो हम कल परसों इजीली कर लेंगे। वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। जस्ट आई वांट टू गिव यू व्हाट लैब वी आर गोइंग टू, आई वांट टू कवर व्हाट टाइप ऑफ लैब वी आर गोइंग टू डू। तो हमने
ये क्लाउड फ्रंट का लैब हमने कल कंप्लीट कर दिया था. ओके, क्लाउड फ्रंट वी हैव कंप्लीटेड. नाउ S3 बकेट का एंक्रिप्शन भी हमने कर लिया था, बट उसमें मेरे को एक नेक्स्ट लेवल आपको बताना है कि हम और क्या कर सकते हैं. एंड कोरस का छोटा सा, दिस लैब इज रिमेनिंग. वन इज लाइफ साइकिल पॉलिसीज क्या होती है S3 में, एंड द फाइनल इज वर्जनिंग. ठीक है, तो तब के तीन तीन चार लैब है, एंड इट विल टेक हाफ आवर टू वन लेक्चर. Okay, and last is the gateway storage, which is for daily uploading the data. Okay, this is what S3 is. So today is Wednesday, we can easily complete 17 and 18. I can continue today, but I'm not taking that much, so that you can consume what we have learned today. I'll just take example हमको करना क्या है कल S3 lab के लिए. Okay, we'll take 5 more minutes. Meanwhile, anybody has any question till here? No, sir. Okay, now आई विल गिव यू अ सिनारियो कि क्या सिनारियो है, और आप सोच के आइए कल कैसे करना है. सो वी टॉक अबाउट एंक्रिप्शन yesterday, we talk a lot about encryption, right? Yes, sir. Now let's say you have a company, you're working in a company, and they enforce that you have to upload the data with in encryption format itself. मतलब कि आप जो भी डेटा S3 पे रख रहे हो उस पर encryption होना ही चाहिए, enabled. So what you can do, you can go to your bucket. Okay, go to the bucket property, and you can see there is a default encryption. यहाँ पे आप अनेबल कर सकते हो, पहले ये ऑप्शन नहीं था. ओके, डिफॉल्ट एंक्रिप्शन मतलब कि अगर आप किसी भी बंदे ने एंक्रिप्शन अपलोड करते हुए हमको एंक्रिप्शन बताना पड़ता है ना, वेन एवर यू अपलोडिंग आवर डेटा, दैट टाइम वी हैव टू पास द एंक्रिप्शन. प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ऑफ रहता है एंक्रिप्शन. बट अगर आपकी कंपनी ने बोला है कि नहीं, यू हैव टू अपलोड द डेटा विद एंक्रिप्शन, सो व्हाट यू कैन डू, देयर आर टू पॉसिबल वेज कि आपकी कंपनी डायरेक्टली बकेट पे जाके डिफॉल्ट एंक्रिप्शन अनेबल कर दे. ये रहा, एंड सेव. देख रहे हैं डिफॉल्ट एंक्रिप्शन, तो SSC रहेगा ही रहेगा अब. सो वेन एवर यू आर अपलोडिंग अ फाइल, उसके पे क्या होगा, डिफॉल्ट एंक्रिप्शन लगेगा लगेगा जो कि बकेट लेवल पे है. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा एंक्रिप्शन भी कर सकता है वो. सो यू कैन सी, गो टू द प्रॉपर्टी, and you can see do not specify the encryption. If your bucket policy require encryption upload, you must specify the upload. If your bucket policy, ठीक है, bucket अब मैं अपलोड करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो देखते क्या होता है. बैच स्क्रिप्ट, ये वाली फाइल है. अगर आप स्क्रॉल करते हो तो बकेट के थ्रू एंक्रिप्शन लग गया, जो डिफॉल्ट एंक्रिप्शन बकेट ने दिया था, राइट, है ना. एक तो ये तरीका है, एंड दिस Yes. दिस केम इन, ये बकेट लेवल एंक्रिप्शन जस्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ थोड़े टाइम पहले. पहले नहीं था कि बकेट से मैं अनेबल कर दूं. ओके, स्टिल देयर आर सम पीपल हु माइट बी सम डूइंग सम मिस्चीवियस एक्टिविटीज. ठीक है, ऑल पीपल आर नॉट सेंसिबल. वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट पे जाके किसी ने ये एंक्रिप्शन हटा दिया, डिसेबल कर दिया. फिर ठीक है, हो सकता है अभी तो बकेट प्रॉपर्टी है, पर किसी ने बकेट प्रॉपर्टी हटा दी, या आपकी कंपनी ने बकेट प्रॉपर्टी पे ध्यान नहीं दिया, या किसी ने बकेट डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हटा दी, या कुछ भी है. there can be n number of possibilities. So one way is to enable the bucket property, right? Now second way, which is a recommended way by Amazon, apart from the bucket property, कैसे कर सकते हैं. So सिनारो क्या है, अब उसका सॉल्यूशन मैं कल दे दूंगा, बट सिनारो क्या है कि आपकी कंपनी ने बोला है कि जो भी फाइल अपलोड हो एंक्रिप्शन अनेबल होना चाहिए. अगर नहीं है तो फाइल अपलोड नहीं होनी चाहिए, फाइल अपलोड ही नहीं होनी चाहिए. दैट इज अ सिनारियो. ठीक है, उसको फेल कर दो, फेल द अपलोड प्रोसेस इफ द एंक्रिप्शन इज नॉट पास्ड. अब मैंने बताया था जब हम लोग फाइल अपलोड करते हैं
तो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं HTTP रिक्वेस्ट के अंदर। ये रिक्वेस्ट है विदाउट एंक्रिप्शन। जब हम अपलोड कर रहे हैं, अगर हमको एंक्रिप्शन अनेबल करना है, अमेजोन को बोलना है, तो हम ये एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजते हैं, Yes. जिससे अमेजोन को पता चल जाता है कि फाइल में एंक्रिप्शन अनेबल किया हुआ है और उसको एंक्रिप्ट करना है ना। सो अगर ऐसा पैरामीटर नहीं आता, सो डोंट अपलोड द फाइल, फेल द प्रोसेस। गॉट इट? सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट। हाउ वी कैन डू दैट, विल सी टुमारो। बट व्हाई दिस रिक्वायरमेंट इज देयर, व्हाई वी हैव टू डू सम एक्टिविटी। हमने अगर लोगों को बोल दिया कि करो, सब लोग करेंगे क्या? नहीं, अगर ऐसा है कि सब लोग कर भी रहे हैं, देयर माइट बी चांसेस वेयर द पीपल माइट मिस। कभी कभी अपलोड करते हुए कुछ फाइल अपलोड करी, मिस कर दिया, एंक्रिप्शन एंक्रिप्शन किया ही नहीं, फिर क्या होगा? एंड बिकॉज यू आर रनिंग अ कंपनी, क्या आप हर बंदे को जाके देख सकते हो क्या, या हर फाइल जाके देख सकते हो क्या? यहाँ पे हजारों, कितनी सारी बकेट्स हैं मेरे अकाउंट में, हर बकेट पे कोई ना कोई बंदा काम कर रहा है, राइट? अब एज अ ऑर्गेनाइजेशन मैं हर बंदे का जो ट्रैक नहीं कर सकता ना वो कैसे फाइल अपलोड कर रहा है। एंड अगर किसी बंदे ने एंक्रिप्शन के बिना अपलोड कर दी, somebody has uploaded a file without any encryption, and tomorrow there is an audit in your company, and because of the compliance issue, उस audit में you found that there are n number of files which are not encrypted. So क्या आप जो authority है, compliance issues जो आपने breach करे, उसको explain कर सकते हो क्या ये बंदे के कारण हुआ है? Who will be in trouble, that person or the company? Who will be held Company, responsible? sir. Company, right? Yes, sir. So Yes. so this is the issue requirement. Because of compliance issue, we have to make sure that every data we store in cloud should be encrypted. अब एग्जांपल, जैसे आपने बैंकिंग क्लाइंट है, आपका आपका टेलीकॉम क्लाइंट है, they have the secure data, they have the user data, right? They have personal information data, they have credit card information, they have क्लाइंट का आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह। यू हैव टू स्टोर द डेटा सिक्योरली इन AWS। अगर उनका डेटा आपसे शेयर कर रहे हो टेलीकॉम वगैरह या बैंकिंग आपकी कंपनी से, तो यू हैव टू मेक श्योर ना उनका डेटा सिक्योर रहे। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? कंप्लायंस इशू आएगा। सो हाउ कैन यू मेक श्योर that every file which you are uploading to S3 is encrypted? We'll do that activity tomorrow. Clear? Okay, sir. Yes, Okay. sir. This is Okay, sir. one lab tomorrow. Second lab will be on versioning. How we can enable the versioning and what is versioning. These are two important labs. And lifecycle rule and replication rule is regarding the lifecycle replication rule we have talked about. That cross-chain replication, we'll cover that. These are small labs, 10 minutes. Okay guys, chalo, bye bye, have a nice day. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye Bye, sir. bye bye.